What exactly is light? A wave, a particle, or both? The answer took centuries of scientific discovery. ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है ना। तो जब हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करते हैं, जब हम लाइट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशंस को देखते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ थ्योरीज दैट हैव बीन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द लाइट। एंड फर्स्ट थ्योरी वाज Newton's corpuscular theory of light. What Sir Isaac Newton said, he said that light propagates in space in the form of streams of elastic bouncy particles called corpuscles of light. And that theory of light explains beautifully reflection, refraction, the rectilinear propagation of light. That means light travels in straight lines. Clear? So that after that there were so many properties of light, like there was interference, diffraction, polarization. That properties of light were not explained when we consider light as a particle, because Newton's corpuscular theory considers light as a made up of corpuscles, means as a particle. Later on it was surpassed by wave theory of light given by H.C. Huygens. H.C. Huygens ने क्या कहा कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, इन द फॉर्म ऑफ, सिंपली हम कह सकते हैं इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एंड ये जो Huygens की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ लाइट थी, इसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? बहुत अच्छी तरह से उसने एक्सप्लेन किया। एंड लेटर ऑन इट वाज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड अ फिजिसिस्ट। उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उसने क्या कहा कि लाइट जो है एंड अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशंस जो है दे ट्रैवल इन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations, in the form of electromagnetic waves or electromagnetic radiations. और ये electromagnetic wave क्या होती है? इसने कहा कि electromagnetic wave is a type of wave which is having oscillating electric and magnetic fields. Already हमने पढ़ा है इसके बारे में। They are having oscillating electric and magnetic fields, and these oscillating electric and magnetic fields are perpendicular to each other, and both these electric and magnetic field components are perpendicular to the direction of propagation of wave. That theory satisfactorily explains all the properties regarding the wave nature, that is reflection, refraction, interference, diffraction, and polarization of light. But that time there was photoelectric effect also, there was black body radiation also. These properties were not explained by electromagnetic theory of light that time, because photoelectric effect was not explained, black body radiation was not explained, though it explained all the properties of light which considers light as a wave. Clear? और लास्ट में कौन सा आया? A great mathematician and a physicist again, Max Planck. इस मैक्स प्लैंक ने कहा, क्या कहा? इसने कहा जो रेडिएट एनर्जी होती है ये इमिट या एब्जॉर्ब होती है, या लाइट जो होती है ये इमिट या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है दे आर एसोसिएटेड, दे प्रोपेगेट इन स्पेस इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन डिस्क्रीट पैकेट्स को हम क्या नाम देते हैं? क्वांटा। एंड इन केस ऑफ लाइट दीज आर नोन एज photons. Clear? And each quantum is having an energy equivalent to h nu, where nu is the frequency of the radiation and h is the Planck's constant. And that theory of light beautifully explains black body radiation, that beautifully explains this photoelectric effect, Compton effect, atomic spectra, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो सारे की सारी प्रॉपर्टीज उसने एक्सप्लेन किए। बट जब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को देखा गया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज मैक्स प्लैंक कंसीडर्स लाइट एज ए पार्टिकल अगेन। सो उसने तो ये प्रॉपर्टीज तो एक्सप्लेन की, लेकिन ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन उसने एक्सप्लेन नहीं की। So that is why it was concluded that light is sometimes behaving as a wave and sometimes it is behaving as a particle, means that light is having a dual character. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि some of the properties of light are explained when we consider light as a wave, and some of the properties of light are explained when we consider light as a particle. But we can say light is having a dual character.